Welcome back, viewers. You are watching the channel Literature Lover, and I am Intazar Hussain with you. Today, we are going to discuss about Ode to Nightingale. His the explanation of this poem, the theme of this poem, the background of this poem, and each and everything about this poem is going to be discussed today. Let's start. A background of the ode. When Keats was living with his friend Charles Armitage Brown in Hampstead, a nightingale had built a nest close to that house. Keats was so influenced by the song of that nightingale, and he felt utter joy in her song. One morning, he took his chair from the breakfast table to the grass plot under the plum tree, where he sat for 2 to 3 hours and wrote this poem. Nightingale means night song stress. इसमें बताया गया है कि जो कीट्स था वो जब अपने दोस्त चार्ल्स के साथ हैम्पस्टेड में रह रहा था तो उसके करीब एक नाइटिंगेल ने अपना नेस्ट बनाया हुआ था, घोंसला बनाया हुआ था। तो वो वहाँ पे सॉन्ग गाया करती थी। तो उसका जो सॉन्ग था वो उसको बड़ा फैसिनेटेड लगता था, बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। तो एक दिन वो वहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद अपनी चेयर लेकर प्लाट के अंदर चला गया और वहाँ पे जाके उसने ये पोएम लिख डाली। बैकग्राउंड ऑफ द पोएम में written in 1819, published in Annals of the Fine Arts in July 1819, consists of 8 stanzas of 10 lines each. These 10 lines consist of a Shakespearean quatrain, ABAB, and a Petrarchan sestet, CDECDE. यानी ये 1819 में पोएम लिखी गई और सबसे पहले ये जो पोएम है ये एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में पब्लिश हुई 1819 के अंदर ही। और इसकी जो टोटल स्टेंजाज हैं वो टोटल 8 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा की 10 लाइंस हैं। तो इसका मतलब है कि 10 लाइंस और 8 स्टेंजाज हैं, तो ये पोएम जो है वो टोटल 80 लाइंस की पोएम है। तो इसकी जो 10 लाइंस हैं उसमें हर एक में जो शेक्सपियरियन का स्टाइल था क्वार्टरन का, यानी 4 लाइंस लिखने का, वो अडॉप्ट किया गया। और साथ ही सेस्टेट में आपको पता है कि 6 लाइंस होती हैं जो कि पेट्रार्क ने इंट्रोड्यूस कराया था सॉनेट में। थीम्स ऑफ द पोएम, अगर हम थीम्स की बात करें, पेन वर्सेस प्लेयर, रियलिटी वर्सेस ट्रांसेंडेंस, melancholy, experience of beauty, sensuousness and passion, search of joy, escapism, immortality, timelessness, mythical imagery, idealism versus skepticism, romanticism, and last one is aesthetic beauty, causes senselessness and ambiguity in poet's mind. क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं इस पोएम का, और ये क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो स्टेंजा टू स्टेंजा है। ये हमारे पास जो फर्स्ट स्टेंजा है उसका क्रिटिकल एनालिसिस है। कीट्स स्टार्ट्स द पोएम बाय डिस्क्राइबिंग हिज एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्सेसिव जॉय, दैट जॉय टर्न्स इनटू जॉयस पेन व्हेन ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल। माय हार्ट एक्स and a drowsy numbness pains. On hearing the song, his 5 senses seem to be overpowered by sleep and dullness. It seems as if he had drunk poisonous plant, hemlock, or he has just sunk into the lethe. Greek river of regretfulness. Greek river of forgetfulness, he assured the nightingale that he is not jealous of her. Rather, he is delighted that he is fortunate enough to listen to this beautiful voice. He can feel joy in this green plot, sitting among beech trees and listening to the beautiful summer songs sung by the birds, being too happy
in thine happiness। तो इसमें ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें वो कीट्स जो है वो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा है अपना एक्सपीरियंस का, जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी था, और बाद में वही जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो पेन में भी चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो वो नाइटिंगेल को बताता है कि वो उससे जेलस नहीं है बल्कि वो हैप्पी है, वो खुश है कि उसको इतना खूबसूरत सॉन्ग सुनने का मौका मिला है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा 2 है। The song of the nightingale is giving him so much pleasure that he tells her about his urge of having a pure wine from Provence, a place in Scotland, kept in wine cellar since years. He wants this wine because this wine would remind him of the original taste of the fruit it is made up of and about the peasants of that city, dancing festivals and greenery of that place, tasting of flora and the country green. He further tells his wish that he wants to drink wine from Hippocrene, a sacred fountain from Greek mythology used to get poetic inspiration. He wants to drink from that fountain because he wants to forget everything around him and want to escape the world to join the world of Nightingale into a dim forest, that I might drink and leave the world unseen and with thee fade away into the forest dim। इस टेंसा में जो कीट्स का एस्केपिज्म होता है वो दिखाया गया है कि कीट्स जो है वो चाहता है कि वो ऐसी शराब पिए, और वो भी उस फ्लोरा से और वहाँ से हिपोक्रेन से, कि वो ऐसी शराब पिए कि उसको जो आसपास की वो सारी की सारी दुनिया है, जो वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है, वो उसको भूल जाए और वो एक ख्याली जगह पे चला जाए। इस वजह से कहा जाता है कि वो एक एस्केपिस्ट है, यानी वो जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो उसके आसपास राउंड अबाउट में नेचुरल वर्ल्ड है, उससे वो एस्केप करना चाहता है, वो उससे निकलना चाहता है, वो उससे दूर भागना चाहता है। इसी वजह से इसको एस्केपिस्ट भी कहा जाता है। थर्ड स्टैंजा में कहता है, नो पोएट is talking to the nightingale. He tells her that this world is all about sorrow and that Nightingale does not know a bit about this terrible world। यानी वो नाइटिंगेल को बताता है कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, टेरिबल हैं, लेकिन वो कहता है कि नाइटिंगेल को इन चीज़ों का पता नहीं है। What though among the leaves hast never known, everyone is sunk into his own sphere of weariness, fret and fever. Youth has become pale, people have grown older in early ages. Life is miserable and everyone is dying. Keats is talking about his own sorrow of losing his brother Thomas due to tuberculosis. And when his brother and mother died due to same disease, Keats became sure somehow that he will die soon due to the same reason. He adds to it by telling that thinking causes problems and beauty is short-lived, and eyes have lost their shine and hope in them. No new love can be born because everything is coming to its end earlier than expected। यानी बेसिकली उसका जो भाई था और उसकी जो मदर थी, उनकी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हुई, और अब कीट्स को भी ये लगता था कि जल्द ही उसकी भी डेथ होने वाली है। उसको अब प्रॉब्लम रहता था, वो भी अब इस वजह से डिस्टर्ब रहता था। तो वो जो उसकी मेंटल डिस्टर्बेंस है वो इस स्टैंजा में शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा 4 है। पोएट इज आल्सो डिप्रेस्ड ड्यू टू दिस सिकनेस अराउंड हिम दैट ही वांट्स टू लीव दिस वर्ल्ड। He wants an escape from the pains of real life. He wishes to fly into the world of imagination through real life. Imagination through the wings of poetry and not by the ecstasy caused by wine। बेसिकली इस स्टैंजा के अंदर जो कीट्स है उसका एस्केपिज्म दिखाया गया है, और वो चाहता है कि वो पोएट्री के ज़रिए जो इमेजिनेशन की दुनिया है, जो फैंटेसी की दुनिया है, उसमें रहे। वो जो रियलिटी है, जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके आसपास मसाइल हैं, उनसे वो बेसिकली निकलना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा 6 में कहता है, इन दिस स्टैंजा पोएट हैज़ ट्रैवल्ड इनटू द नाइटिंगेल्स वर्ल्ड
The night is dark, so he cannot see what flowers are under his feet and what flowers are grown on the boughs. But he can guess the flowers by their sweet smell. He can smell the sweet scent everywhere. तो यहाँ पे वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करता है, सेंसेस का यूज़ करता है। वो कहता है कि रात के अंधेरे में चूँकि फ्लावर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उनकी जो फ्रेगरेंस है, उनकी जो स्मेल है, उससे आइडिया हो रहा है, उससे पता चल रहा है कि ये कौन सा फ्लावर्स हैं, कौन सी उनकी रिकग्निशन जो है वो उनकी उससे फ्रेगरेंस से और स्मेल से हो रही है। लेटर ही टेल्स दैट ईच ऑफ दीज फ्लावर्स शोज दैट दिस इज़ द मंथ ऑफ मे, एज द ग्रास, द thicket, white hawthorn, wild eglantine, musk rose are the blessings of the May. As flowers are in full bloom, so honeybees have gathered around them to make honey, and poet can hear the murmuring voice of those bees. यानी बेसिकली वो ये बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर रस जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उन रस से जो हनी बी है वो अपना रस निकाल कर अपने लिए वो शहद बनाना चाहती है, वो हनी बनाना चाहती है। इसलिए वो वहाँ पे उनकी जो मरमरिंग है, उनकी जो साउंड है हनी बी की, वो वहाँ पे उसको क्लियरली सुनाई दे रही है। स्टैंजा जो 6 है उसमें कहते हैं, वाइल लिसनिंग द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल पोएट फील्स डेथ टू बी मोर ईजी एंड बेटर ऑप्शन देन लिविंग इन दिस क्रूअल वर्ल्ड। ही इज़ हेयर एक्सप्रेसिंग his wish to escape the real world and reside permanently in his world of imagination where no sorrow could touch him. I have been half in love with easeful death. He said that he has written about death in his poems and he called it by nicknames with love. And it is more appropriate time to die than ever. यानी बेसिकली इस पैराग्राफ को अगर इस स्टैंजा को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो पोइट है वो बेसिकली जो रियल वर्ल्ड है उसको वो कहता है कि वो क्रूअल वर्ल्ड है, वो फुल ऑफ सैडनेस है, उसमें डाइजेक्शन ज़्यादा है, उसमें हैप्पीनेस कम है। तो वो कहता है कि इससे ज़्यादा जो है वो डेथ, उससे ज़्यादा चार्मिंग उसको फील होती है कि जब इंसान इस दुनिया से नेक्स्ट दुनिया में, अगली दुनिया में चला जाएगा, यानी ये डेथ हो जाएगी, तो एटलीस्ट वो कहता है कि इस दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, उससे उसकी जान छूट जाएगी। Then poet asked the nightingale would she sing the same song that she is singing now when the poet will die and his ears will no longer be able to listen to its beautiful song. वो कहता है, उससे पूछ रहा है नाइटिंगेल से कि क्या जब वो पोइट इस दुनिया में नहीं रहेगा और उसके वो कान ये सॉन्ग सुनने के काबिल नहीं रहेंगे तो क्या तब भी वो ऐसे ही गाती रहेगी। Then the song of her will become an elegy on the death of the poet. Poet was aware of his death and he knew that somebody will remember him in his songs. The same happens after his death because P.B. Shelley wrote Adonais, an elegy on the death of John Keats. तो बेसिकली जो पोइट है वो नाइटिंगेल को कहता है कि जब मेरे जाने के बाद, मेरे गुजर जाने के बाद, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो आप इसी तरह अपना सॉन्ग जो है वो गाती रहेंगी। वो कहता है कि तब अगर वो सॉन्ग गाएगी तो इसका मतलब होगा कि वो एलिजी होगी और मेरी डेथ के ऊपर वो मॉर्निंग होगी। उसको पता था कि उसके मरने के बाद लोग जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा याद करेंगे, और इसकी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है कि P.B. शैले ने उनकी डेथ के ऊपर एक पोएम लिखी थी, एडोनाइस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंजा 7। तो स्टैंजा 7 के अंदर हम देखते हैं, इन दिस स्टैंजा ही कॉल्स नाइटिंगेल एज एन इमॉर्टल बर्ड। तो इसके अंदर 7 स्टैंजा के अंदर वो नाइटिंगेल को कहता है कि वो इमॉर्टल बर्ड है, बिकॉज द सेम सॉन्ग sung by the nightingale was heard hundreds of years ago by the old generations. The same song was a source of comfort for Ruth, a lady from the Old Testament. The same song was enjoyed by the emperors and their clones, and this very song was heard in the lands of fairies. So Nightingale and her song exists since centuries, and no hungry and greedy generation can ignore her existence. यानी वो कहता है कि जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो बेसिकली कई जनरेशन से, कई सालों के से ऐसे ही एज़ इट इज़ चलता आ रहा है और लोग इसको एंजॉय करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से प्रिंस, यानी इसका जो लिटरेचर में है वो बहुत ज़्यादा रोल है।
क्योंकि इसकी बेसिकली जो है वो लिटरेचर में इस सॉन्ग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत से लोगों ने, बहुत से राइटर्स ने, बहुत से पोइट्स ने इसको अप्रिशिएट किया है। कोई भी लिटरेचर का राइटर जो है इसको इग्नोर नहीं कर सका। 8th स्टैंजा में कहते हैं इन दिस कंक्लूडिंग स्टैंजा, ये हमारे पास लास्ट और कंक्लूड कर रहा है पूरी पोएम को। पोएट कम्स बैक टू द रियलिटी, ही हैज़ रियलाइज्ड दैट वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन इज़ टेम्परेरी एंड शॉर्ट लिव्ड एंड नो इमेजिनेशन कैन स्टे फॉर लॉन्ग। ही हैज़ टू कम to the real world and face the actualities of life, the sorrows of thinking and the disease of the man. He said, adieu, goodbye to the dream and the nightingale. The world forlorn is like a bell to him, which make him return to the actual reality. The voice of the nightingale is now going far from him, and it's almost gone. And no poet is not sure either he is awake or asleep, or was it just a vision, or he was in a dream while he was awake. यानी लास्ट स्टैंजा में वो अब दोबारा जो है वो अपनी दुनिया में, रियल लाइफ में वापस आ गया और अब उसको महसूस ही नहीं हो रहा कि वो असल दुनिया में आ चुका है या वो ख्वाब देख रहा है, वो सो रहा है या वो जाग रहा है। तो वो कहता है कि जो इमेजिनेशन वर्ल्ड है, जो ख्याली दुनिया है, वो शॉर्ट लिव्स है, वो परमानेंट नहीं है, वो थोड़ी सी है, अर्जी है। जैसे कि ख्वाब होता है, आप एक ख्वाब देख रहे होते हैं, जब आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि आप तो रियल वर्ल्ड में नहीं थे, बल्कि आपके लिए वो जस्ट एक ख्वाब था। तो नेक्स्ट जो है वो सेंसुअसनेस के ऊपर बात की गई है। सेंस ऑफ साइट, इमेजरी ऑफ नाइट, क्वीन, मून, स्टार्स, फेरीज, ग्रीन स्टेस, ग्रास, वाइट एंड पर्पल फ्लावर्स। ये आपको सेंस ऑफ साइट यानी उसकी इमेजरी की तरफ लेके जा रहा है। ऑडिटरी सेंस, सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, मर्मरिंग ऑफ हनी बीज, यानी ये दोनों चीज़ें जो हैं ये किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं, ऑडिटरी सेंस को। नेक्स्ट हमारे पास है सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल ऑफ फ्लावर्स इन द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के अंदर जो स्मेल है या फ्रॉग्रेंस है वो सेंस ऑफ स्मेल की तरफ इशारा है। सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट ऑफ विंटेज, टेस्ट ऑफ फ्लोरा, यानी जब टेस्ट की बात हुई है तो इसका मतलब है कि ये सेंस ऑफ टेस्ट को यूज़ किया गया है। सिंथेस्थीसिया, पर्पल स्टेंट माउथ बिकॉज इट इज़ डिस्क्राइबिंग द सेंस ऑफ टेस्ट एंड साइट। तो ये हमारे पास जो कीट्स को एज अ सेंशुअस पोएट इसी वजह से कहा जाता है कि वो जो है वो इंसान के 5 सेंसेस को यूज़ करता है अपनी पोइट्री के अंदर। वो सेंस ऑफ साइट हो, वो सेंस ऑफ स्मेल हो, सेंस ऑफ टेस्ट हो, ऑडिटरी हो या सिनेस्थीसिया हो। तो ये बेसिकली जो उसकी सेंशुअसनेस है वो भी इस पोइट्री में और इस छोटे से पैराग्राफ में आपके सामने एक्सप्लेन की गई है। It is a poem of midnight and sorrow and beauty. Keats practiced the theory of art for art's sake. Ode to Nightingale is the mighty abstract idea of beauty in all things. इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचा। होप सो आपको ये जो पोएम है ये अच्छे तरीके के साथ समझ में आ गई होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।